Hello dear student, today's topic 3.2 half matrix. First topics today, अवयव का एक अदिश से गुणा, अवयव का एक अदिश से गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। इसको समझने से पहले first we want to solve this questions. 2x plus y, simplify 2x plus 2y. Similarly 3 into x plus y plus z, 3 into x, 3x, 3 into y, 3y plus 3 into z, 3z. Multiply by 2, then multiply by 2, all elements multiply by 2. Similarly here is x plus y plus z, इन तीनों में multiply by 3. So similarly here is a equal to aij m by n, a equal to aij m by n, to multiply by k, all elements multiply by k, order no change, यहाँ order जो होगा वो no change, all elements में multiply by k. First question, a equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then find the value of 2a. 2 value of a 1, 2, 3, 4, 5, 6. All elements multiply by 2. 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5, 2 into 6. Again second question, multiply by minus 3, minus 3a, minus 3, value of a 1, 2, 3, 4, 5, 6, all elements multiply by minus 3, minus 3, minus 6, minus 3 into 3, minus 9, minus 12, minus 15 and minus 6, minus 3 into 6, minus 18. Again next question, a is given 1, 2, 3, 4, then find the value of 2a. Question number a, 2a, all elements multiply by 2. We can write direct, आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3 and 2 into 4. Similarly 5a, multiply by 5, all elements multiply by 5, 5 into 2, 10, 15 and 20. Today's first topic, multiplication of a matrix by scalar. क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सेकेंड टॉपिक, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, अवयवों का योग. हियर इज गिवन दैट a इक्वल टू aij m by n. एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर है m by n. सेकेंड मैट्रिक्स गिवन है bij m by n, इसका भी ऑर्डर है सेम. दो मैट्रिक्स का योग तभी संभव है जब दोनों का क्रम ऑर्डर समान हो. टू मैट्रिक्स, सम ऑफ टू मैट्रिक्स एप्लीकेबल इफ बोथ आर ऑर्डर सेम, दोनों के ऑर्डर सेम हो. हियर इज a इक्वल टू aij m by n, b इक्वल टू bij m by n. देन सम ऑफ टू मैट्रिक्स a प्लस b, aij m by n प्लस bij m by n. बोथ आर ऑर्डर दोनों के एक जैसे हैं, इसलिए सम होंगे. सम ऑफ कोरेस्पॉन्डेंट एलिमेंट, ऑर्डर नो चेंज, aij प्लस bij. कोरेस्पॉन्डेंट एलिमेंट्स का सम होगा और ऑर्डर नो चेंज. क्वेश्चन, a is given 2 4 3 2, b given 1 3 minus 2 5,
and C given minus 2, 5, 3, 4. Then find the value of A plus B, second A minus B, and third 3A minus C. First find the value of A plus B. Putting the value of A 2, 4, 3, 2 and putting the value of B 1, 3, minus 2, 5. Order of first matrix 2 by 2. Order of second matrix 2 by 2. दोनों के ऑर्डर समान हैं इसलिए यहां पर योग होगा. और कैसे होगा? कोरेस्पोंडेंट एलिमेंट 2 plus 1 3, 4, 4 plus 3 7. We can write direct 3 plus minus 2, 3 minus 2 1, 2 plus 5 7. A plus B complete. Similarly A minus B. Negative sign, change of sign second matrix. Then 2 minus 1, 2 minus 1 1, 4 minus 3 1, 3 minus minus plus, minus minus plus, 3 plus 2 5, 2 minus 5 minus 3. Second question 3A. Third question 3A minus C. 3 value of A 2 4 3 2 minus C. Value of C minus 2 5 3 4. Multiply all elements by 3. That is a scalar multiplication. 3 into 2 6, 3 into 4 8, 3 into 3 3 into 4 12, 3 into 3 9, 3 into 2 6 and minus 2 5 3 4. Subtract 6 minus minus plus, plus 6 plus 2 8, 12 minus 5 7, 9 minus 3 9 minus 3 6, 6 minus 4 2. मान लीजिए A इज गिवन है 1 2 3 4 और B गिवन है 1 2 3 4 5 6. देन A प्लस B. इन दोनों का सम नहीं होगा. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर जो क्रम जो है वो है 2 by 2 और सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2 by 3. दोनों के ऑर्डर समान नहीं है इसीलिए सम ऑफ टू मैट्रिक्स हियर इज नॉट पॉसिबल. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द फॉलोइंग. इन सभी क्वेश्चंस को हल करना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए. ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स 2 by 2, ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स 2 by 2. दोनों के ऑर्डर सेम है इसलिए इनका सम होगा. सम ऑफ कोरेस्पोंडेंट एलिमेंट, संगत अवयवों का योग करना है. संगत अवयव देखिए a प्लस ए, डायरेक्ट वी कैन राइट डायरेक्ट 2a, b plus b 2b. Similarly minus b plus b, that is 0, and a plus a 2a. Next question, first matrix is given a square plus b square, b square plus c square, a square plus c square, a square plus b square, plus 2ab 2bc minus 2ac minus 2ab. Order of first matrix 2 by 2, ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स 2 by 2. दोनों के ऑर्डर सेम है. देन सम ऑफ टू मैट्रिक्स एप्लीकेबल. सम ऑफ कोरेस्पोंडेंट एलिमेंट, संगत अवयवों को जोड़ लें. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सेकेंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc. सेकेंड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
minus 2ac, and last a square plus b square minus 2ab. Also we know that is identity, a square plus b square plus 2ab, a plus b whole square, b square plus c square plus 2bc, b plus c whole square, a square plus c square minus 2ac, a minus c whole square, a square plus b square minus 2ab, that is a minus b whole square. That is complete. Again, next question, 2 by 2 matrix given, cos square sin square cos square plus sin square cos square sin square. Order of first matrix 2 by 2, order of second matrix 2 by 2, दोनों के दोनों ऑर्डर 2 by 2 समान है, इसलिए इनका सम होगा, और यह होगा सम ऑफ कोरेस्पोंडेंट एलिमेंट cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, we know that trigonometrically identity cos square theta plus sin square theta is equal to 1. Then cos square x plus sin square is 1, sin square plus cos square 1. Similarly, again 1, 1, 1. Next question, cos theta sin theta minus sin theta cos theta plus sin theta minus cos theta sin theta. First, multiply by cos theta, all elements multiply by cos theta into cos theta, cos square theta, cos theta into sin theta, cos theta into sin theta, cos theta into minus sin theta, minus cos theta sin theta, and cos theta into cos theta, cos square theta, plus sin theta into sin theta, sin square theta, sin theta into minus cos theta, sin theta cos theta, sin theta into cos theta, sin theta cos theta, sin theta into sin theta, sin square theta. ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स 2 by 2 एंड ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स 2 by 2, दोनों के दोनों ऑर्डर समान है, अतः सम ऑफ कोरेस्पोंडेंट एलिमेंट, संगत अवयवों को हम जोड़ लेते हैं. संगत अवयव कोरेस्पोंडेंट एलिमेंट जो है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा, मल्टीप्लीकेशन 2 into 3 equal to 3 into 2 equal to 6. Commutative law is true in algebra multiplication. And minus cos theta sin theta plus sin theta cos theta, and last cos square plus sin square theta, cos square plus sin square theta. Negative positive, positive negative cancel. We know that cos square theta plus sin square theta, that is 1. cos square theta plus sin square theta 1, 0, 0, 1. We know that is identity matrix I 2 by 2. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, find the value of x and y. Here is given that first equation is given that x plus y equal to 7025, and second equation is given x minus y 3003. Elimination method, x plus y and x minus y. Sign of y positive,
here is sign of y negative, then sum 1 and 1 plus 2 plus y minus y cancel, x plus x 2x. We can write direct sum of two matrix order 2 by 2, then applicable 7 plus 3 10, 0 plus 0 2 plus 0 and 5 plus 3 divide by 2 1 by 2 10 0 2 8. Then value of x we get 10 divided by 2 5, 0 divided by 2 2 divided by 2 8 divided by 2. Value of x is given, we get value of x 5014. Putting the value of x in equation 1, 5014 plus y equal to 7025. Subtract of matrix first. 7025 minus 5014. Subtract 7 minus 5, 0 minus 0, 2 minus 1, 5 minus 4. Value of x and y, that is answer. Value of x and y. Next question, find the value of x if y is given 3214 and also given that 2x plus y equal to 10 minus 32. Solve it. 2x plus y. Value of y is given 3214. Replace value of y. यहाँ value of y रख लिया 10 minus 32. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी इसे ट्रांसपोज करते हैं 10 minus 32. पक्षांतर करते हैं यहाँ, यह होगा 3214. सिंप्लीफाई, सब्ट्रैक्ट 1 minus 3 minus 2, 0 minus 2 minus 2 minus 3 minus 1 minus 4, 2 minus 4 minus 2, divide by 2, minus 2 minus 2 minus 4 minus 2. All elements divide by 2. 2 by minus 2 by 2 minus 1 minus 2 by 2 minus 4 by 2. That is answer. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Next question, find the value of x and y. Here is given that 130x plus y012 and right hand side given 5618. Multiplication by scalar 2 into 1 2, 2 into 3 6, 2 into 0 2 into x, y0 1 2 5 6 1 8. Sum of two matrix 2 plus y. Sum of correspondent 6 plus 0, 0 plus 1 and 2x plus 2, 2x plus 2 and right hand side is given 5 6 1 8. Order of left hand side matrix 2 by 2, order of right hand side matrix 2 by 2. दोनों के ऑर्डर समान है, अतः यहाँ पर टॉपिक यूज होगा इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, अवयवों की समानता. दो मैट्रिक्स, दोनों के दोनों मैट्रिक्स जब समान है तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे, इसलिए तुलना करते हैं. इक्वेट
2 plus y equal to 5. Simplify. Y equal to 5 minus 2, 3. And last, 2x plus 2. 2x plus 2 equal to 8 plus 2 transpose. 8 minus 2 equal to 6. 2x equal to 6. 6 divided by 2. Answer is 3. Value of x is 3 and value of x is equal to 3 and also value of y equal to 3. These are values of x and y. Similar types of question. Question B. Find the value of x, y, z and t if that is given that 2 into x, z, y, t plus 3 into 1 minus 1, 0, 2 equal to 3 into 3, 5, 4, 6. Multiplication by scalar. All elements multiply by 2. 2 into x, 2 into z, 2 into y and 2 into t. Multiply by 3. All elements multiply by 3. 3 minus 3, 3 into 0, 3 into 2. Multiply by 3. All elements multiply by 3. 3 into 3. 3 into 5. 3 into 4. 3 into 6. Sum of two matrix. 2x plus 3. 2z minus 3. 2y and 2t plus 6. 9, 15, 12 and 18. Also here is equality of two matrices. यहाँ पर दो मैट्रिक्स समान दिए गए हैं, यहाँ पर दो मैट्रिक्स हमको समान दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर हम संगत अवयवों को बराबर कर लेंगे. Equality of correspondent element. Then we get 2x plus 3. 2x plus 3 is equal to 9. Simplify. 2x plus 3 transpose 9 minus 3. 2x equal to 6. Divide by 2. Then value of x 3. Second, 2z minus 3 equal to 15. 2z minus 3 transpose 15 plus 3. 2z 18. Divide by 2. 9. Value of z 9. And 2y equal to 12. Divide by 2. 12 by 2. That is 6. And last, 2t plus 6 equal to 18. 2t plus 6 transpose 18 minus 6. 2t equal to 18 minus 6, 12. Divide by 2. Then answer is value of x, value of y, z and t. Value of x 3. Value of y 6. Value of z 9. And last value of t 6. These are values of x, y and z and t. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Next question. Find a matrix X such that 2a plus b plus x equal to 0, where is given that a equal to minus 1, 2, 1, 3, 4 and b 3 minus 2, 1, 5. There is equation is given that 2a plus b plus x equal to 0. Putting the value of a and b. There are many ways solve this question. इसे बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. Putting the value of a का मान रखते हैं -1, 2, 3, 4 plus putting the value of b 3 minus 2, 1, 5 plus x equal to 0. Multiplication by scalar. All elements multiply by 2. 2 minus 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4 plus
3 minus 2 1 5 plus x equal to 0. Sum of two matrix minus 2 plus 3 1 4 plus minus 2 2 6 plus 1 8 plus 5 plus x equal to 0. X equal to transpose. This matrix transpose 1 2 7 13. Multiply by minus 1 minus 2 minus 7 and minus 13. That is value of x. Again, find the value of x given that 2a plus 3b equal to 5x if a equal to 8 0 4 minus 2 3 6, b equal to 2 minus 2 4 2 minus 5 1. Putting the value of a and b to value of a 8 0 4 minus 2 3 6 plus 3, b value of b 2 minus 2 4 2 minus 5 1, also given that equal to 5x. यहाँ दिया है multiply by 2 all elements 2 into 8 2 into 0 2 into 4 2 into minus 2 2 into 3 2 into 6 plus 3 into 2 3 into minus 2 3 into 4 3 into 2 3 into minus 5 3 into 1 3 equal to 5x. Sum of two matrix 16 plus 6 22 0 plus minus 6 8 plus 12 minus 4 plus 6 6 minus 15 minus 9 12 plus 3 15, given that 5x. Therefore x equal to 1 by 5 22 minus 6 22 minus 9 15. All elements divide by 5, that is value of x. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Hello dear student, today's topic 3.2 half matrix. First topics today, अवयव का एक अदिश्य गुणा. अवयव का एक अदिश्य गुणा. Multiplication of a matrix by scalar. Multiplication of a matrix by scalar. इसको समझने से पहले first we want to solve this questions. 2x plus y. Simplify 2x plus 2y. Similarly 3 into x plus y plus z. 3 into x 3x 3 into y 3y plus 3 into z 3z. Multiply by 2, then multiply by 2, all elements multiply by 2. Similarly here is x plus y plus z, इन तीनों में multiply by 3. So similarly here is a equal to aij m by n, a equal to aij m by n, तो multiply by k, all elements multiply by k. Order no change. यहाँ order जो होगा वो no change. All elements में multiply by k. First question, a equal to 1 2 3 4 5 6. Then find the value of 2a. 2 value of a 1 2 3 4 5 6. All elements multiply by 2. 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5, 2 into 6.
Again second question, multiply by -3, -3a, -3, value of a 1 2 3 4 5 6, all elements multiplied by -3, -3 -6, -3 into 3 -9, -12, -15 and -6, -3 into 6 -18. Again next question, a is given 1 2 3 4, then find the value of 2a. Question number a, 2a, all elements multiply by 2. we can write direct, आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3 and 2 into 4. Similarly 5a, multiply by 5, all elements multiply by 5, 5 into 2, 10, 15 and 20. Today's first topic, multiplication of matrix by scalar. क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए.